हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जिसका इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। जी हाँ, आज हम बात करने लगे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं इन टेक फील्ड, सो विच प्रोफेशन इज़ ट्रेंडिंग एंड विच प्रोफेशन इज़ very beneficial for you if you are from tech industry. So let's get started and see which profession is on trending and which profession you should choose. बेसिकली आज हम बात करने लगे हैं डेटा साइंस की फील्ड की। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा साइंस क्या है। ठीक है, डेटा साइंस, व्हाट इज डेटा साइंस? Data science is an interdisciplinary academic field that uses statistics, scientific computing, scientific methods, processing, scientific visualization algorithm and systems to extract the extrapolate knowledge from potentially noisily structured और unstructured data. बेसिकली इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा टेक इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला डेटा है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, चाहे टेक्निकल फील्ड की कंपनी हो, टेक्निकल फील्ड की इंडस्ट्री हो या नॉन टेक इंडस्ट्री हो, उसके अंदर डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट माना जाता है। ठीक है, उसको स्ट्रक्चर्ड हो या अनस्ट्रक्चर्ड, उसको एक विजुअलाइज वे में, उसको एक साइंटिफिक वे में प्रोसेस करना, उसके एल्गोरिदम बनाना ताकि वो उस इंडस्ट्री को बेनिफिट दे सके कि किस तरह से आप जो अपने इंडस्ट्री की वर्किंग है उसको बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये एक छोटी सी एग्जांपल भी हम देखते हैं कि डेटा साइंस में क्या क्या होता है। बेसिकली डेटा की कलेक्शन होती है सबसे पहले, उसके बाद उसकी क्लीनिंग होती है। ये बेसिकली एक पूरी पूरी पीछे इसके बैकएंड पे लाइब्रेरीज हैं, इसके अंदर बैकएंड पे बहुत बड़े एल्गोरिदम्स हैं ये, लेकिन ये ब्रांचेज हैं। ठीक है, कलेक्शन होता है सबसे पहले डेटा का, क्लीनिंग होती है डेटा के ऊपर, फिर डेटा को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद मॉडल बिल्डिंग होती है कि इस डेटा के ऊपर किस तरह की बिल्डिंग कर सकते हैं मॉडल। देर आर वेरियस मॉडलिंग एल्गोरिदम इन डेटा साइंस। ठीक है, उसके बाद मॉडल की डिप्लॉयमेंट होती है कि ये मॉडल किस लिए हम बनाते हैं और किस लिए डिप्लॉय करना चाहते हैं, उसके बाद मॉडल की डिप्लॉयमेंट करते हैं। ठीक है, अब आप जान गए हैं कि डेटा साइंस क्या है। ठीक है, बेसिकली डेटा साइंस में सबसे ज़्यादा पाइथन लैंग्वेज यूज़ होती है क्योंकि ये सबसे वास्ट लैंग्वेज है और इसके जो एल्गोरिदम्स हैं बैकएंड के, जो जितने भी डेटा साइंस के एल्गोरिदम्स हैं वो ज़्यादातर पाइथन लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू टू लर्न पाइथन और इन्फॉर्मेशन के लिए भी एज वेल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डेटा साइंस जॉब मार्केट, क्योंकि आप वही चीज़ करें जिसका अभी ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, जॉब्स इन वर्ल्ड वाइड। ओके, सो वी गेट दिस चार्ट विच इज़ फ्रॉम 365 डेटा साइंस। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डेटा साइंस इस वक्त तमाम इंडस्ट्री के अंदर 69% है एज कम्पेयर टू अदर लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, डेटा इंजीनियरिंग, दीज ऑल आर लेसर फ्रॉम द डेटा साइंस। मतलब इसकी जॉब मार्केट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस वेबसाइट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो यू विल सी द वेरियस थिंग अबाउट डेटा साइंस एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशन और अदर लैंग्वेजेस ऑफ जॉब मार्केट। ठीक है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पाइथन यूज़ होती है, एसक्यूएल, आर, जावा और स्केला, ये सारी लैंग्वेजेस आप देख सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि अगर आप डेटा साइंस के अंदर जाना चाहते हैं, ओके, सो व्हाट स्टेप्स डू यू हैव टू फॉलो। ओके, सो अब हम चलते हैं कोर्सेरा पे, क्योंकि कोर्सेरा आप जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी बड़ी दुनिया की कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने कोर्स को यहाँ पे होस्ट करते हैं ताकि स्टूडेंट्स सीखें और उनके करियर में हेल्प दे सके। ठीक है, बेसिकली we have this course which is IBM data science, which is offered by IBM. Okay, we can see how many courses in this professional course. Okay, IBM data science professional certificate. ठीक है, ये बेसिकली एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है, इसके अंदर वेरियस कोर्सेज होंगे, आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं। व्हाट इज डेटा साइंस, टूल फॉर डेटा साइंस मेथोडोलॉजी, पाइथन फॉर डेटा साइंस, पाइथन प्रोजेक्ट्स फॉर डेटा साइंस, आप देख सकते हैं इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 12 कोर्सेज हैं। ठीक है, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल दीज कोर्सेज यू विल गेट अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट विच यू कैन शेयर ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म like LinkedIn, like Facebook, Twitter, whatever you want to publish. Okay, so as well as you can add into your CV. That is also very beneficial to get a job if you want to add in
CV, ओके। सो इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं लाइक IBM, गूगल, जो कि डेटा साइंस के कोर्सेज जो हैं वो होस्ट करते हैं कोर्सेरा के ऊपर। सो इफ यू वांट टू evolve your career in data science, then you have to learn from beginning, then you have to learn intermediate courses, and then you have to explore and evolve on the expert level courses, and you have to practice on your end, so then you will become data scientist, okay? So if we ask from ChatGPT for the roadmap of data science, so ChatGPT will provide us, okay? So you have to put these prompts on ChatGPT. So let's see what ChatGPT will give us. Okay, absolutely. Here is a beginner friendly roadmap for learning data science from scratch. So first of all, in phase one, you have to spend 1 to 2 months on the beginning. Like you have to learn on the math and statistics. Then you have to learn Python programming, beginner level, like variables, lists, files. Okay. So in phase two, you have to core data science tools like from 3 to 4 months, NumPy, Pandas, Matplotlib, and Seaborn. Okay, so then you have to learn machine learning basics. Then you have to intermediate skills like SQL, advanced ML concepts. Then in you have to practice on real world examples or skills working with real data sets. You have to like Kaggle, data cleaning and wrangling and on EDA. So these things you have to learn. Okay, at 6 you have to deep learning, and 7 you have to bonus soft skill like portfolio. You have to like you have to create a portfolio on like website like on LinkedIn, so make a resume and then interview prep. Okay, so you can see in 11 months or 12 months, within 1 year you will become a data scientist if you will spend very seriously 12 months. Then your life will be easy and your life become changed by data scientist, because data scientist is a most trending skills and most trending profession in the world. You can search, you can ask from your instructors. So I hope this video helps you in your career if you want to become a data scientist. So that's all for today's video, and stay tuned for the next video. Till then, keep learning, keep growing, and goodbye.